क्या हुआ जब कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व में यूपीए सरकार में दिग्गज मंत्री रह चुके मनीष तिवारी ने केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार की संसद में धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आज का दिन संसद के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कल एक बहुत ही बड़ा बिल पेश किया गया संसद में। आप जानते हैं, मनरेगा को खत्म करके सरकार नया बिल लेकर आई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी कहा जा रहा है। और आज संसद में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल पेश किया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बिल का नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। शांति बिल इसको बोला जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो सरकार भारत के जो नागरिक परमाणु क्षेत्र है, इसको न केवल प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रही है, बल्कि एफडीआई के लिए भी खोल रही है, विदेशी प्लेयर्स के लिए भी खोल रही है। तो ये बिल जो पेश किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बिल को आज संसद में पेश किया। और विपक्ष की तरफ से सबसे पहले खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज सांसद और बहुत शानदार बोलते मनीष तिवारी। और मनीष तिवारी ने दोस्तों इस सरकार की जो धज्जियां उड़ाई हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो सवाल हमारे सामने उठाए, बहुत सीरियस है। दोस्तों, परमाणु कार्यक्रम जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है, इनका देख रेख, इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मानकों के को ध्यान में रख के करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सा भी लीकेज मतलब पूरे की पूरे देश क्या पूरी की पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ये सब जानते हैं। दोस्तों, अभी तक इसमें केवल भारत सरकार का एकाधिकार रहा है। एक तरह से भारत सरकार की मोनोपोली रही है। पहली बार सरकार चाहती है कि न केवल प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये खोल दिया जाए, बल्कि विदेशी एफडीआई भी इसमें आए, विदेशी प्लेयर्स भी आए। तो मनीष तिवारी ने सबसे पहले तो बीजेपी को आईना दिखाया कि आज आपको विकसित भारत का सपना दिख रहा है, आज आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत को न्यूक्लियर एनर्जी मिले और उसके जरिए हम बिजली का उत्पादन कर पाएं, इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका से। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में डील हुई थी। दोस्तों, उस वक्त संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। आज मनीष तिवारी ने वही बात याद दिलाई कि ये पूरा जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम था, ये नेहरू द्वारा शुरू किया गया, इंदिरा गांधी ने इसको आगे बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपनी पूरी की पूरी सरकार को ही खतरे में डाल दिया, इसलिए कि हम इस मामले में स्वावलंबी बने। लेकिन आपने उस वक्त संसद में इसका विरोध किया था और उस सरकार के खिलाफ आपने अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए थे। ये भी बात याद रखी जाए। हालांकि जब ये उन्होंने बोला तो काफ़ी बीजेपी के लोग हंगामा करने लगे, लेकिन इसके अलावा मनीष तिवारी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। दोस्तों, उन्होंने ये बोला है कि ये भी इस बिल में एक क्लॉज मिसिंग है कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस फील्ड में आता है, कोई विदेशी प्लेयर इस फील्ड में आता है और भगवान ना करे कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो उसमें उसकी क्या जवाबदेही होगी, ये इस पूरे बिल में इस क्लॉज का कुछ भी मिसिंग है। ऐसा कोई क्लॉज उन्होंने नहीं पाया, ये बोला मनीष तिवारी ने। इसके अलावा मनीष तिवारी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि एक ही महीने पहले, अभी ठीक 1 महीने पहले, गौतम अडानी की कंपनी द्वारा कहा गया है कि वो इस तरह के किसी कार्यक्रम में इंटरेस्ट है उनका, और 1 महीने बाद सरकार बिल लेकर आ गई। तो क्या इसमें भी कोई कनेक्शन है क्या? जब इस तरह की बातें मनीष तिवारी बोलने लगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लग गई। लेकिन आपको सुननी चाहिए दोस्तों ये बातें, क्योंकि ये सीधे आपको मुझे प्रभावित करने वाली बात है। सरकार ये चाहती है क्योंकि हमको विकसित भारत बनाना है, तो हमें जो हमारी बिजली की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी वो डिमांड हम पूरी कर पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ऐसा करके आप इस फील्ड को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई तो फिर इसका कोई अंडू नहीं हो सकता। सुनिए मनीष तिवारी की दिलचस्प बात। जो परमाणु रंग भेद नीति थी, उसको जब तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे परम मित्र जो उस तरफ बैठे हैं, उन्होंने क्या किया, वो 23 जुलाई 2008 को उस सरकार के खिलाफ जो भारत की परमाणु रंग भेद से जो पीड़ित था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। It is important that you reflect on your own conduct. When the UPA government was trying to break India's nuclear isolation and nuclear apartheid, you brought a vote of no confidence against that government. It's another matter that no confidence motion
was defeated 275 to 256 with 11 abstentions. Now let me... अरे इतिहास तुमको समझाना बहुत जरूरी है. History is very important because you people try to derail India's nuclear program. You tried to derail India's nuclear program. You were an impediment in breaking India's nuclear apartheid. That's a history that you should not forget. That's a history you should not forget. You covered yourself with ignominy. आपने भारत का जो परमाणु ट्रैजेक्टरी थी उसको डिरेल करने की कोशिश की राजनीतिक कारणों से. अध्यक्ष जी, प्लीज एड्रेस द चेयर. इनको बिठाइए. लेट द हाउस बी इन ऑर्डर. लेट द हाउस बी इन ऑर्डर. लेट द हाउस बी इन ऑर्डर. सर, सच्चाई कड़वी होती है अध्यक्ष जी. I will be giving opportunity to you to अध्यक्ष speak. जी, Let him complete. सच्चाई कड़वी होती है. Now let me Please address the chair. आप बैठिएगा, please. Now Mr. Chairperson sir, अरे तो शुरुआत आ गई. अनुराग जी जरा बैठ जाइए. Now let me, Mr. Chairperson sir, come to the merits of this bill. Now government has brought the present bill to open up the civilian nuclear sector to private participation. Clause 3-1-C of the bill. There is speculation that government wants to bring in 49% to 100% foreign direct investment into this sector. What strikes me as very strange, Mr. Chairperson, sir, that a conglomerate which has built an empire on leased public assets announces its intent to enter the nuclear energy sector in late November 2025, and in December 2025 we have this bill. Is it a coincidence that the Adani group of companies announces its intent to participate in the civilian nuclear sector, and within a month we have this bill in the House? Is it a coincidence? I'm merely raising a question. I'm not imputing any motives. I am not insinuating anything. I am merely... 1 second, please. Honorable Minister, sir. Mr. Chair, I'm not yielding. I'm not yielding. The minister can reply when he has to. No, I am not yielding. No, I am not yielding. No, I am not yielding. The Honorable Speaker asked me to be brief and not to touch upon the salient features of the bill. Otherwise, I was going ahead with that. Now, nowhere in the bill has there been any intention, obviously or inadvertently, reflecting that this is meant to benefit a certain house. Now, this is an allegation which puts the entire house into disrepute. We are practicing the highest norms of democracy, and nowhere in the bill. So this is totally an unfounded and a politically motivated charge which has no reflection on the body of the bill. आप बैठिएगा. Mr. Chairperson, sir. Honorable Minister has replied. Mr. Chairperson, sir, I wasn't making any insinuation. I wasn't imputing any motives. I was just saying that is it just coincidental that this has happened? Honorable MP, sir, you already mentioned it could be a so coincidence. let me go further, Mr. Chairperson, sir. And let me come to, since this bill seeks to repeal the Civil Liability for Nuclear Damages Act 2010, let me also recap what happened in this House on the 25th of August 2010, since I had led the debate on that particular bill on that particular day in this very House. So on the 25th of August 2010, the then MOS Prime Minister's office, Mr. Jiten Singh's predecessor, Mr. Prithviraj Chavan, came before this House and he said, and I quote, and I'm quoting from the proceedings of the Lok Sabha, "Sir, I have come before this House and say with all humility that there is an unprecedented political consensus across the political stream
including the civil society or whatever people we could bring on board, there was a slight contention about a few items. We explained the logic of why we brought in some of the amendments, particularly the amendment to clause 17. Now, what is this clause 17? Specifically clause 17B. Let me read it out for the perusal of this House. So the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 said, and I'll read 17B, the operator of the nuclear installation, after paying compensation for nuclear damage in accordance with Section 6, shall have a right of recourse where B says the nuclear incident has resulted as a consequence of an act of supplier or his employee, which includes supply of equipment or material with patent or latent defects or substandard services. Now, this was a clause on which there was a consensus across the House, across all political parties, that this needs to be included. Now, let me contextualize it. Why was this important? Because the Department of Atomic Energy, which leads India's nuclear program, felt that if we are going to be going into a collaboration where foreign suppliers are going to come in, there needs to be a clause in the bills or a section in the act whereby if there is a nuclear incident because of the design in the product which has been supplied, that nuclear supplier should be made liable. And this was supported by the then by the former External Affairs and Finance Minister of the BJP, who unfortunately had been expelled from the party in August 2009, came back on the 24th of June 2010, and this debate was happening in the August of 2008. And let me quote late Jaswant Singh Ji. So late Jaswant Singh Ji, while speaking on the bill, he says, it is really clause 17B of the bill dealing with the operator's right to recourse or the right to recourse, which then became a bone in our throat. बोले वो हमारी गली में हड्डी फंस गई. You have worked overtime to remove that bone. So late Mr. Jaswant Singh, the left parties, every other section of this House was unanimous that suppliers' liability should form a part of the civil nuclear liability regime. And what do I find? What I find is that when you read clause 11 of the present bill, and the minister is here, if I'm making a mistake, I'm open to be corrected. But I did not find a single clause or a single word which says anything about supplier liability. The supplier liability has been completely removed.